हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ बर्तमान क्लास को। बर्तमान आम मैंने लाइव आसी सारे तो जल्दी जल्दी आसिकी क्लास रे जॉइन हो जाओ, टाइम हो गलानी। ओके, एंड मोर जदि स्क्रीन विजिबल अच्छी एंड वॉइस क्लियर अच्छी फास्ट टिके कमेंट सेक्शन में जन दियो, देन आम मैंने क्लास टी को स्टार्ट करवा। सॉरी, ओके ठीक अच्छे, तो ऑल क्लियर। ओके देन वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, समस्त को प्रति नमस्कार। जल्दी जल्दी आसिके क्लास रे जॉइन हो जाओ, आम मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन गुड़ी को देखा जोड़ा कि आमर एग्जाम कि बहुत इंपोर्टेंट रही पॉलिटी किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आसिके क्लास रे जॉइन हो जाओ। ओके, तो देखो आमर फर्स्ट क्वेश्चन टी कौन रही वो समस्ते आंसर दबा लगी कमेंट सेक्शन रे ट्राई करो, ठीक हो कि भूल हो। ओके ठीक अच्छे, फर्स्ट क्वेश्चन देख। ओके देन ठीक अच्छे, सब क्लियर। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन टी आमर untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden is the essence of which of the following articles of the Indian Constitution? आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे अनटचेबिलिटी रो एबोलिशन लिखा जाइछि? कौन हम यार करेक्ट आंसर? आर्टिकल 14, 15, 16, 17। अनटचेबिलिटी को आबोलिश करबा लगी आमर भारतीय संविधान रो केतेतम धारा रे लिखा जाइछि? कौन हम यार करेक्ट आंसर टी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल 17 हो यार करेक्ट आंसर, नहीं कि आर्टिकल 17 रे लिखा अछि जे आमर भारतीय संविधान अनुଯାयी अनटचेबिलिटी बा जोटा अछुआ प्रथा जोटा थिला, ठीक अच्छे, सेटा को आबोलिशन करा जाइछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Article 18 of the Indian Constitution gives the provision of abolition of titles. Which of the following are the provisions under abolition of titles? तो देखो आर्टिकल 18 रे आमे माने जानिछे जे आम भारतीय संविधान रो धारा 18 रे लिखा जाइछि abolition कथा। से जो abolition of titles रहिछि, abolition ऑफ टाइटल्स, ठीक अच्छे। तो एमान को मध्यरु ए चारटा जाकरु देखिबा कौन माने को प्रोविजनटा एमान को मध्यरु आसी थाए ता मध्य रे। ओके, तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? देखिबा ऑप्शन गुडी को, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिटरी और shall be conferred by the state, no citizen of India shall accept any title from any foreign state, no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state, na all of them. यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? आर्टिकल 18 अनुसार आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जोटा कि आमको abolition of टाइटल रो जो प्रोविजन टा रही सेटा को देई थाए। which of the following are the provisions under abolition of title? से सब गुड़िक तो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर, ठीक अच्छे। ऑप्शन डी है यार करेक्ट आंसर। ओके, जो मैंने भी ऑप्शन डी आंसर देइछ सेमानकर आंसर परफेक्ट अच्छी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which of the following articles of the Indian Constitution provides protection of certain rights regarding freedom of speech etc. to Indian citizens? तो freedom of speech हमको को आर्टिकल दउची? freedom of speech को आर्टिकल दउची? एमान का मध्यरु देखो आर्टिकल 18.2, आर्टिकल 18.1, आर्टिकल 19 ना आर्टिकल 20, एमान का मध्यरु को आर्टिकल टा आम माननको प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स दौची फ्रीडम ऑफ स्पीच ऊपर किना। ओके, वेरी गुड, आर्टिकल 19 हो यार करेक्ट आंसर। ओके, आर्टिकल 19 ही हमको सर्टेन राइट प्रोवाइड करी थाए रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 of the Indian Constitution are conferred on Indian citizens, all personnel living within Indian territory, foreigners also, all of them. फंडामेंटल राइट माने आर्टिकल 19 अनुसार फंडामेंटल राइट टा आम भारतीय संविधान जहाँ की देई थाए सेटा को मान को देई थाए? इंडियन सिटीजन को देई थाए, ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन इंडियन टेरिटोरी को देई थाए,
फॉरेनर्स ऑल्सो दे थाए ना ऑल ऑफ देम समस्त को दे थाए यार करेक्ट आंसर कौन हम यस तो यार करेक्ट आंसर टी होची ओनली इंडियन सिटीजन मान को ही फंडामेंटल राइट्स मिल थाए ओके ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर जो माने भी ऑप्शन ए आंसर देच सेमानंकर आंसर संपूर्ण भाव रे करेक्ट अछि देन क्वेश्चन कौन रही देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding nature of the rights that are guaranteed by article 19 of the Indian constitution is or are found to be correct देखिबा को स्टेटमेंट गुडी का ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन रही देख आर्टिकल 19 of the Indian constitution is confined to what are known as civil rights as distinguished from political rights such as the right to vote or to hold any political office or the privileges of a chamber of the legislation then next statement कौन रही article 19 of the Indian constitution refers to what are known as natural or common law rights as distinguished from rights which are created by a statute and must be exercised subject to conditions imposed by it article 19 of the Indian constitution doesn't include the right to life तो एमान को मध्यरु को स्टेटमेंट गुड़िक करेक्ट अच्छे देखा पचारे आमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ द राइट्स दैट आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट सब गुड़िक ठीक हम ओके सब गुड़िक ठीक अच्छे सो 1 2 3 तीन जाक स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन डी हम यार करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देख समस्ते आंसर देवा लगी ट्राए कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तुम कॉन्स्टिट्यूशन उपरे खास करके इंडियन पॉलिटी रू ओके तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कौन रोची इन डिटरमाइनिंग द सब्सटेंटिव रीजनेबलनेस द कोर्ट हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रेस्ट्रिक्शन टू बी रीजनेबल First option रही the restriction must have a rational connection with the object sought to be achieved by the law. The restriction imposed must not be in excess of the mischief sought to be prevented or the object sought to be achieved by the law. Both A and B, neither A, neither B. Question कौन दिला हमको in determining the substantive reasonableness the court has to take into consideration various factors. Which of the following points have to be satisfied in order to adjust the restriction to be reasonable? कौन हम both हम ओके ऑप्शन A and B तो ऑप्शन C होची यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ओके देन वेरी गुड ऑल ऑफ यू समस्त आंसर करेक्ट अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी चलो देखा अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमरो Which of the following principles and guidelines should be kept in mind for considering the constitutionality of a statutory provision upon a challenge on the alleged vice of unreasonableness of the restriction imposed by it? देखो ऑप्शन गुड़ी को टिके दियो the restriction must have a rational connection with the object sought to be achieved by the law. सॉरी एटा 6 नंबर रही गला नेक्स्ट हमर रही कोन हां कोन रही क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन अपॉन ए चैलेंज ऑन द alleged vice of unreasonableness of the restriction imposed by it. Option A रही the restriction sought to be imposed on the fundamental rights guaranteed by article 19 of the Indian constitution এটা ঠিক হবো next option B রয়েছে the there must be a direct and proximate nexus or a reasonable connection between the restriction imposed and the object sought to be achieved এটা भी ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो ऑल ऑफ देम ओके ऑप्शन डी होछि यार करेक्ट आंसर बुझिला ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को चला बहुत गुड़े क्वेश्चन रही
आज बहुत गुड़े माने देखा केते क्वेश्चन अच्छी देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, which of the following statements regarding freedom of the press is or are found to be correct? freedom of press पाई एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट गुड़िक करेक्ट अच्छे देखा। फर्स्ट स्टेटमेंट रही, this freedom can't be claimed by a newspaper or other publication run by a non-citizen. Next statement रही, the freedom of press under our constitution is not higher than the freedom of an ordinary citizen. It's subject to the same limitations as are imposed by Article 19(2) of the Indian Constitution, and to those limitations only. Both are correct, both are incorrect. Only one, only two. देखिबा कौन होबो यार करेक्ट? Both are correct. Okay, दीटा जाको करेक्ट अछि, दीटा जाको स्टेटमेंट ठीक अछि. बुझेला? बोथ आर करेक्ट. समस्ते आंसर दियो, समस्ते आंसर दबा लगी ट्राई करो. समस्त को कहितली जे 3टा बेले हमर क्लास स्टार्ट होची तो समस्त पळे आसीबो, किंतु फिर भी पिला माने किछि एब्सेंट रहउछंती, किछि असुविधा नहीं. देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन चला. Which of the following amendment acts empowers the court to adjust the reasonableness of a restriction imposed even on the right guaranteed by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution? एमन को मध्यरो को अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर करूची हमरो कोर्ट को टू एडजस्ट द reasonableness of a restriction imposed even on the right guaranteed by Article 19(a) of the Indian Constitution. तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम रे? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके, ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो जो मैंने भी ऑप्शन ए आंसर देछ सेमानकर आंसर करेक्ट अछि. देन क्वेश्चन टी कौन देखिबा. देन हमर क्वेश्चन रहिछि, क्लॉज 1B of the Article 19 of the Indian Constitution guarantees the freedom of citizens to meet with each other in any number provided the assembly is teachable, unarmed, large, both A and B. क्लॉज ए के बी हमर आर्टिकल 19 रो क्लॉज 1B अनुसार भारतीय संविधान रो जोटा कि गारंटी देई थाए the freedom of citizens to meet with each other in any number provided the assembly. ओके, तो यार करेक्ट आंसर टी होची कोन ना? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, टीचेबल, अनआर्म्ड. ओके, देखिबा केते जण ऑप्शन डी आंसर देइछो. वेरी गुड. जो माने भी ऑप्शन डी आंसर अच्छी तुम मानकर आंसर करेक्ट अच्छी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा. Which of the following statements regarding freedom of association is or are found to be correct? Freedom of association लगे एमान को मध्यरु को स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि थिबा. फर्स्ट स्टेटमेंट देछि, the right guaranteed by Article 19(1)(c) is an ordinary right which is enjoyed by all citizens to form associations. It has no reference to a right which is conferred by a particular statute to act as a member of a body which is the creation of the statute itself. तो ए भले गोटे क्वेश्चन आगरु जस्ट टिके आगरु कि मैंने देखिथिले. तो दीटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि ना गोटे ठीक अछि, गोटे भूल अछि ना दीटा जाक भूल अछि? दीटा जाक करेक्ट अछि. ओके, 1 and 2. तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर. 1 and 2 both are correct. सो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर. ठीक अछि. देन क्वेश्चन को चलाओ. Which of the following restrictions on freedom of association is or are considered to be unreasonable? एमान को मध्यरु देखिबा freedom of association लागि कोटा unreasonable रहिछि को स्टेटमेंटा देखिबा. गवर्नमेंट can't make it obligatory for every employee to become a member of an association sponsored by the government. Now, a restriction on this freedom which may remain in force for an identified period at the pleasure of the executive authorities is an unreasonable restriction. Option C रहिछि,
where those who have a right to form an association will be kept away and the society shall be run by a group of persons nominated by the government, there is a virtual deprivation of the right to association. Now all of them. यार करेक्ट आंसर कौन हम? ऑब्वियसली तो यार करेक्ट आंसर टी होची से ऑप्शन डी. ओके ऑल ऑफ देम सब गुडी को करेक्ट अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही हमर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस को क्लॉज अनुसार द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन से भी जगह बना जाए कि बसवास करि परिबो तो एटा को आर्टिकल हमको प्रदान करि थाए एई जो राइट टा. आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(b), 19(1)(a), 19(1)(d. तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो? जेकोसी जगह आम मैंने जाकि बसवास करि परिबा तो एई जो हमको एई राइट टा हमको किए दे थाए कौन हम यार करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी कह दियो. वेरी गुड. तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर. आर्टिकल 19(1)(d) अनुसार आम मानको मिली से अधिकार जेकोसी भी जगह बसवास करने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Surveillance is needed for the legitimate purpose of prevention of crime and its process must necessarily be confidential. In which of the following situations the court may interfere in the police surveillance? तो देख सर्विलांस आम मान लगी निहाती दरकार अच्छी कौन भी जगह कौन भी प्रकार जब क्राइम है एंड तार प्रोसेसटा निहाती भाव में कन्फिडेंशियल रहिबो किंतु ता भितरे जदि कोर्ट चाहिला जे से पुलिस रो सुपरविलेंस भितरे किना आसे सॉरी सर्विलेंस भितरे किना किछि जानिबार जानि परिबो तो एमान को मध्यरु ताकु नै कि को स्टेटमेंट ऑफ क्राइम वेयर द सर्विलांस इज एज excessive as to squeeze out the vulnerability of the individual. Only one and two dita jaga correct अछि ना dita jaga correct नाही. दीटा जगह ये करेक्ट हम. ओके ऑप्शन 1 and 2 both statements are correct. So ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर. वेरी गुड बहुत बढ़िया. तो देखिबा हमर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही छे देख. ओके देन देखो which of the following statements regarding freedom of residence is are found to be correct. रेसिडेंस की जो आमको फ्रीडम दिया जाइए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस लगी एमान को मध्यरु को स्टेटमेंटा करेक्ट अछि देखिबा. ओके सिंस द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू ए सिटीजन a person can complain of the infringement of his right under the sub clause 1e if his citizenship has been determined by a law made by parliament under article 11. It is not available to a foreigner. ना दीटा जाक भूल अच्छी ना दीटा जाक ठीक अच्छी ना गोटे ठीक अच्छी गोटे भूल अच्छी. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? दीटा जाक ठीक करेक्ट अच्छी. ओके सो ऑप्शन कौन? ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर. 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन देख टिके क्वेश्चन देखिए आंसर दियो. देख which of the following expression is are employed under article 19(1)(g of the Indian Constitution. कौन दिया जाइए हमको आर्टिकल 19(1)(g अनुसार कि ना आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एमान को मध्यरु कौन एक्सप्रेस करि थाए एम्प्लॉयमेंट को नहीं कि माने प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस ना सब गुडी को ऑब्वियसली सब गुडी को ही हबो. प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस सब गुड़िक हम. ठीक अच्छे तो ये सब गुड़िक आम माने एम्प्लॉयमेंट आमको मिल पार आम एम्प्लॉयड हो पार. ठीक अच्छे सो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर. बुझेला. वेरी गुड. देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा. देख कौन रही आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी देख which of the following clauses is are covered under article 20 of the Indian Constitution. article 20 रे किना एमन को मध्यरु कौन कौन रही देखिबा. No person shall be convicted of any offence except for of a law in force
at the time of the commission of the act charged an offence? Charged as an offence. Okay. Then next ଆମର ରହିଛି statement ଟା, no person shall be prosecuted and punished of the same offence more than once. Okay. Then third statement ରହିଛି, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो? वेरी गुड, तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। तीनटा जाक जो स्टेटमेंट 1 2 3 तीनटा जाक करेक्ट अछि, बुझिला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 23 of the Indian Constitution is about accused's immunity from being compelled to be a witness against himself. This clause gives protection to whom? To a person accused of an offence, na against compulsion to be a witness, na against himself, na all of them. वेरी गुड, तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। आर्टिकल 23 हमर जो भारतीय संविधान आर्टिकल 23 अनुसार जो अक्यूज्ड रो जो इम्यूनिटी थाए, जहाँ को अक्यूज करा जाय था, ठीक अछि, फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, से तार निज पई की विटनेस दे परिबो, ठीक अछि। तो ए जो क्लॉज ता प्रोटेक्शन दे थाए समस्त को जे अक्यूज हेई थाए against compulsion to be a witness against himself. So all of them हो जाएगा correct answer option D रे जोटा रही छी। Then question देखो, which of the following is an essential ingredient of the clause 3 of article 20 of the Indian Constitution? तो देख केवल 19-20 आर्टिकल ही एत सारा जिनस रही, आमको सब गुड़ाक जानवाक पड़ो निहाती भाव में, कारण क्वेश्चन कौट भी केतबेले किना पकई दउची, हाँ ना नहीं? तो निहाती भाव में देखा पड़ो। तो देख से अनुसार आम आर्टिकल क्लॉज 3 आर्टिकल 20 रो जोटा रही है कौन रही देखा, क्वेश्चन रे कौन देला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इजर आर एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एमान को मध्य कोटा गोटे एसेंशियल इंग्रेडिएंट आमर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 रो कह, कंपल्सन, कन्फेशन, प्रोहिबिशन, बोथ ए एंड बी। कंपल्सन हो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर। ओके, कंपल्सन। देन क्वेश्चन कौन रही देख, नेक्स्ट आमर क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज आर फाउंड टू बी करेक्ट? पर्सनल लिबर्टी को लेकिन एमान को मध्य को स्टेटमेंटा करेक्ट हबो? द ऑब्जेक्ट of Article 21 of the Indian Constitution is to prevent encroachment upon personal liberty by the executive, save in accordance with law and in conformity with the provisions thereof. Second statement रही, before a person is deprived of his life or personal liberty, the procedure established by law must be strictly followed and must not be departed from to the disadvantage of the person affected. So ऑप्शन ए बी सी डी चार्टा जाक भितर कोटा ठीक हम, दीटा जाक स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी ना, केवल 1 टा करेक्ट अच्छी ना, केवल 2 टा करेक्ट अच्छी ना, एमान को मध्यरु किछि भी हेले करेक्ट नाही। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। 1 एंड 2 दीटा जाक स्टेटमेंट एठी ठीक रही, बुझेला? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, समस्त आंसर प्राय ठीक रोचे, देखिए आंसर दियो कौन हम। द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल 21 एक्सटेंड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रोटेक्शन टा दिया जाइए हमको आर्टिकल 21 अनुसार एमान को मध्यरु, तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? सिटीजेन्स, ऑल पर्सन्स, फॉरेनर्स, पर्सन्स अंडर इम्प्रिजनमेंट। द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 टा समस्तक पई कि थाए। ओके, से सिटीजन हुंतु, फॉरेनर हुंतु, जे जे कहीं भी हुंतु, तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर, ऑल पर्सन्स, बुझेला? वेरी गुड। देन क्वेश्चन देखिबा, which of the following can be included in right to life under article 21 of the Indian Constitution? एमान को मध्यरु
को स्टेटमेंटा इनक्लूड करा जाई पारिबो इन राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, right of a person not to be subjected to bonded labor or to unfair conditions of labor, eta correct अछि. Okay, then the right of a bonded labor to rehabilitation after release, eta भी ठीक अछि. right to a decent environment and a reasonable accommodation, eta भी ठीक अछि. so option A होची यार करेक्ट आंसर. तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि. एटा 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 तीनटा जाक करेक्ट अछि. तो देखिबा तुम माने कोन आंसर देछ. वेरी गुड. तो ऑप्शन ए जो माने आंसर देछ से मानकर आंसर संपूर्ण भाव रे ठीक अछि. देन हमर कोन क्वेश्चन रहछि चलो देखिबा. In which of the cases, what a second, all clear? Okay then. In which of the cases domiciliary visit by the police without the authority of a law was held to be violated of Article 21 of the Indian Constitution, assuming that a right of privacy was a fundamental right derived from the freedom of movement guaranteed by Article 19(1)(d) of the Indian Constitution as well as पर्सनल लिबर्टी गारंटेड बाय आर्टिकल 21. आज पूरा कने पूरा एते सारा एते बड़ बड़ क्वेश्चन दे देछे जेमति कि हमरो एग्जाम रे ही आसीबो. कारण एते बड़ बड़ क्वेश्चन देई कि ही माने पचारिथिबो तो गोटे गोटे ही हम माने आंसर तो आसी जिवो, किंतु क्वेश्चन टा एते बड़ बुले 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 देइथिबो एग्जाम रे हमको आंसर माने से क्वेश्चन पढ़ी कि हमरो टाइम पळेबो. सेथि लागि एते बड़ बड़ क्वेश्चन पकाई थाए. तो देखो केते सिंपल क्वेश्चन टा को बुले बुले कि देइछि. एठी किना ऑप्शन कोन रहिछि. Dr. Sujit Jale, V State of versus State of Haryana. Kharak Singh versus State of UP. Govind versus State of MP. Neera Mathur versus LIC. तो यार करेक्ट आंसर टी हेबो कोन. खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ओके, ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर. वेरी गुड. देन क्वेश्चन टी कोन रहिছে देखो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजनेबलनेस ऑफ ए पेनल लॉ इज आर फाउंड टू बी करेक्ट. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट रहिଛି ए प्रोसीड्यूर व्हिच वाज आर्बिट्ररी ऑपरेसिव और फैंसीफुल वाज नो प्रोसीड्यूर एट ऑल. Second statement रहिछि a procedure which was unreasonable couldn't be said to be in conformity with Article 14 because the concept of reasonableness permitted that article in toto. तो ऑप्शन ए रहिछि बोथ आर करेक्ट. ना केवल वन करेक्ट ना केवल टू करेक्ट ना एमान मध्यरु केही भी करेक्ट नहंती. ऑप्शन डी हबो ना ऑप्शन ए हबो कौन कौच रे. ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया. तो जो माने भी ऑप्शन ए आंसर देछ से मानकर आंसर करेक्ट अछि. देन हमर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution. माने गोटे मनीष गोटे व्यक्ति जदि अरेस्ट होची से एंड डिटेंशन करा जाउची ठीक अछि तो किछि केस रे से ताको प्रोटेक्ट करि परिबो. एई कथाटा हमर को आर्टिकल रे लिखा जाइछि. को आर्टिकल रे अछि आर्टिकल 22. वेरी गुड. तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर. बुझेला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट. देखिबा कोन स्टेटमेंट रहिछि. फर्स्ट, the person arrested has a right to consult a legal advisor of his own choice ever since the moment of his arrest and also to have effective interview with the lawyer out of the hearing of the police though it may be within their presence. Second statement रहिछि the right extends to any person who is arrested whether under the general law or under the special status special status. तो यार करेक्ट आंसर बोथ आर करेक्ट. ठीक अछि, दीटा जगह स्टेटमेंट करेक्ट अछि. सो ऑप्शन सी होछि यार करेक्ट आंसर. ए जेते बेले स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसी थाए ना तो तुमे माने टिके हड़बड़े जाई थाओ बट टिके शांत भाबरे किना बसी के से क्वेश्चन गुडा को देखिबो निहाती भाबरे तारा आंसर बहुत इजीली पाई जिवो तुमे माने. ओके,
Then question देखो, which of the following is mentioned in clause 2 of article 22 of the Indian Constitution? हमरो भारतीय संविधान रो आर्टिकल 22 रो क्लॉज 2 रे किना कोन लिखा है? कौन लिखा है रे? द राइट टू कंसल्ट लीगल पार्टिशनर, राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल पार्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ना बोथ ए एंड बी? देखो बोथ ए एंड बी हबनी, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ओके, ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर। जो माने ऑप्शन सी आंसर देइछो सेमानकर आंसर करेक्ट अछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द राइट टू मेक ए representation against the order of detention is a most cherished and valuable right conferred upon a detenu under article dash of the Indian Constitution, and if there has been any infraction of such right, the detenu is entitled to be released. आर्टिकल 22, 22, 22, 4, 22, 5. The right to make a representation against the order of detention is the most cherished and valuable right conferred upon a detenu under article 22, 5. ओके, ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन डी जो मैंने आंसर देइछो गायत्री नहीं कौन रे को आंसर टा दौच? ऑप्शन डी सी सब दे दौच एक बेले जानवी केमिति? ओके, तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? ऑप्शन डी 22, 5। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इज क्वेश्चन देखो, द सॉरी कौन रहा हमरो? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? को राइट अंडर आसी थाए जोटा प्रोहिबिट करा जाय थाए ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबरर्स? तो राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। एटा केते इजी क्वेश्चन रही, तो एटा तो जानि दबो। कौन बता हले यार करेक्ट आंसर? अच्छा ठीक अच्छे, तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ऑप्शन बी जो मैंने आंसर देइछो सेमानकर आंसर करेक्ट अछि। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट हमर क्वेश्चन रही, लेबर और सर्विस एक्जेक्टेड बाय गवर्नमेंट और ए पर्सन इन पावर विदाउट गिविंग रिम्यूनरेशन फॉर इट इज टर्म्ड एज फोर्स्ड लेबर, बेगर, अनएम्प्लॉयड, नन ऑफ देम। निहाती भाव में लेबर और सर्विस एक्जेक्टेड बाय गवर्नमेंट और ए पर्सन इन पावर विदाउट गिविंग रिम्यूनरेशन फॉर इट इज टर्म्ड एज बेगर। ओके, तो ऑप्शन बी है यार करेक्ट आंसर। देखिबा कौन आंसर देइछ? आंसर दियो रे। ओके, देन देखिबा, देन हमर कौन क्वेश्चन रही, देखो, which of the following article of the Indian Constitution states no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? चाइल्ड लेबर कथा कह जाए। सो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? आर्टिकल 24 रे कथा हमर लिखा जाए, तो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर। बुझिला? ओके, वेरी गुड। तो देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन is contained in which of the following articles of the Indian Constitution? Right of the रिलीजन कथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोथरे लिखा है? को आर्टिकल रे? आर्टिकल 25 रु 28, 29 रु 30, 32 ना 19 रु 22? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। 25 रु 28 रे लिखा जाइछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, nothing in article 25 of the Indian Constitution shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम रे? स्टेटमेंट गुड़ाक देख, फर्स्ट स्टेटमेंट रही, regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। सेकेंड स्टेटमेंट रही, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग अपॉन
of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Which of the above statement either are found to correct? Both are incorrect. Both are correct. Now only one correct. Now only two correct. Question रे कौन थिला? Nothing in Article 25 of the Indian Constitution जोटा कि हमर कौन कथा लिखा जाइछि जोथरे कि रिलीजन कथा रहिछि राइट टू रिलीजन. तो Article 25 हमर Indian Constitution रो shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. तो यार करेक्ट आंसर टी बोथ आर करेक्ट. ठीक अछि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. कोटा हबो ताले ऑप्शन बी. ओके बोथ आर करेक्ट. वेरी गुड बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा. The meeting of the state legislative council are presided by the dash. State legislative council लेकिना किए प्रेसिडेंट थांती डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर चेयरमैन गवर्नर. यार करेक्ट आंसर कोन हबो? The meeting of the state legislative council लेकिना जो गोटे मीटिंग बसले जे कोनोसी मीटिंग हो से प्रेसिडेंटशिप कहार थाए बा किए प्रेसिडेंट थांती चेयरमैन. ओके ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर. बुझिला. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Under Article 26 of the Indian Constitution, subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to what? To establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property. ना सब गुड़िक निहाती भाव तो सब गुड़िक होची यार करेक्ट आंसर. ओके ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. ऑप्शन डी है यार करेक्ट आंसर. बुझेला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर इजर आर फाउंड टू बी करेक्ट? एमान को मध्यरु देखो. फर्स्ट स्टेटमेंट कौन रही? दिस आर्टिकल डजंट टेक अवे द राइट ऑफ द स्टेट टू एक्वायर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए रिलीजियस डोमिनेशन. The article doesn't create rights in any denomination or a section which it never had. Article 25(1) states that all persons are entitled to freedom of religion. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम रे? वेरी गुड. तो 1 2 3 तीनटा जाक करेक्ट अच्छी. तीनटा जाक करेक्ट. तो ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर. बुझेला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 26 आर्टिकल 26 रो क्लॉज सी रे किना कोन रहिছে देखिबा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जांपल राइट टू ओन प्रॉपर्टी इजर आर फाउंड टू बी करेक्ट. एमन को मध्यरु को मेंटा क्लॉज सी आर्टिकल 26 रो क्लॉज सी पाई कि ठीक जणा पडुची. फर्स्ट स्टेटमेंट रहिଛି ए क्लॉज अंडर रे every religious domination has the right to own and acquire property belonging to a religious body, but it does prevent such property from being acquired by authority of law or to be assessed to revenue. Second रही the right guaranteed by article 26 can't be claimed after the ownership of a religious denomination in otherwise validity terminated. रही बास टे लंबा लंबा रही जाइए माने स्टेटमेंट टाइप जिते बड़े क्वेश्चन आसी जाए तुम टे बोर होता हो किंतु एग्जाम रे भी ये टाइप क्वेश्चन बहुत गुड़े भी रखी दूसरी जानी जानिकी ताकि टाइम वेस्ट हम पिलांकर. तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? इजी क्वेश्चन थी किंतु पचारि देथिबो बुलेई बांकी. तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर. दीटा जाक करेक्ट अच्छे. ओके देन देखो. फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instruction or religious worship in certain educational institutions is the essence of which of the following articles of the Indian Constitution? तो किछि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे कि ना आम मैंने जमती गणेश पूजा करुचे कि कौन से प्रकार माने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पाई और रिलीजियस वर्शिप पाई सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे कि हमको फ्रीडम दिया जाइए. को आर्टिकल अनुसार दिया जाइए?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम? आर्टिकल 27, 27(1), 28 ना 26? 28 रे दिया जाइए। ओके, आर्टिकल 28 रे दिया जाइए। तो ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर। देन आमर क्वेश्चन कौन रही देख, आर्टिकल 29 to 30 of the Indian Constitution confers which of the following distinct rights? तो आर्टिकल 29 रु 30 आम मानक ये सबू गुड़िक राइट दे था, सबू राइट दे था। कौन कौन राइट रही देख, राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व इट्स ओन लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर। लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर कथा जिते आसीज से 29 रु 30 आर्टिकल हम। Right to all religious or linguistic minorities to establish the administer educational institutions of their choice. Right of an educational institution not to be discriminated against in the matter of state aid on the ground that it is under management of a minority. So option D है यार correct answer. Then हमारा question कौन रही देखा, which of the following conditions for the application of clause 1 of article 30? आर्टिकल 30 रो जो क्लॉज 1 रही ताकू नहीं कि एमान को मध्यरु को कंडीशन टा करेक्ट हबो देखिबा। In order to claim the benefit of article 31, the community must show that it is a religious or linguistic minority and that the institution was established by it. Second statement रही, if an institution has been brought into being by a minority community, it matters not if the funds have been supplied by a single individual or by the community at large, or whether members outside that community are also taking advantage of the institution. So यार करेक्ट आंसर टी हम दीटा जाक ये ठीक रही। तो बोथ ए एंड बोथ 1 and 2 दीटा जाक करेक्ट अच्छे। सो ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। तो यार करेक्ट आंसर टी आम मैंने जानले जे कौन है, ऑप्शन सी है यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। तो यहपरी भाव में आमर जहाँ भी क्वेश्चन थिला 40 क्वेश्चन थिला एथरे आमे माने डिस्कशन करिनेले। तो वर्तमान क्लास टी को आमे माने एठी रखिबा। जदि आउ कहार किछि असुविधा रही तो पचारि पार। देख जितेबाला कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसी था, बारंबार कहूँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन केवल एमती बड़ बड़ ही पकई थाए टाइम वेस्ट करने लगी, किंतु ताको जदि इजिली तुम मैंने बुझीगल तो जल्दी तुम मानकर सरीज। ओके, हाँ इकोनोमी क्लास आने या पर आसो। ठीक अच्छे। ओके देन तो देखा तेरे यार सरला जहाँ भी क्वेश्चन थिला। तो वर्तमान क्लास टी को ये रखा। ओके, थैंक यू।